Hey dear students, I'm Tanveer and I'm back with a new lecture on Walt Whitman's poem Miracles. This is Whitman, not Whitman, and this is miracles, not miracles, okay? Well, we'll not talk further, we'll straight away jump to our topic. Walt Whitman was an American poet and he was born in 1819 and he passed away in 1892. And as a writer, he believed in humanism. He was a humanist. And as a humanist, he believed in the inherent dignity of a man. And he believed that a man should be free and everyone should be treated equally. And he also believed that human beings give purpose and meaning to their lives. Okay, he glorified humankind in his poetry, and he also denounces all the institutions which limit human freedom and which keep humans in shackles. Do you understand? Yes. Okay, he is a sort of a philanthropist, okay, a lover of the mankind, and his humanism is a sort of altruism. That means he has a high regard for others, he has a high respect for others, he cares for others without caring for himself. Okay, so he's a selfless guy. Now let's move ahead and look at some of the important points about Walt Whitman and his poetry. He's known as Bard of Poetry, Bard of America, and this title was offered to him by a great poet, great modern poet, Ezra Pound. Ezra Pound called him Bard of America, and Bard, boys and girls, means poet. Shakespeare is also called Bard of England, and Walt Whitman is known as Bard of America because he's the voice of America. He is a representative poet of America. Okay, he celebrates America in his poetry, just like our Majur. Okay, and he's also a father of free verse. Well, people call him father of free verse, and free verse means a type of poetry without rhyme and without regular meter. ठीक है, without rhythm. इसी को बोलते हैं फ्री वर्स, जिसमें रेगुलर राइम स्कीम, रेगुलर रिदम एंड जो मीटर्ड ना हो. ठीक है, एंड he was very controversial during his lifetime because of a collection of poems, of an anthology of poems titled as Leaves of Grass. It was a very controversial book of Walt Whitman, and the reason is that he celebrated human body in these poems, in this book of poems. People thought that it's sort of profane and it's loaded with obscenity. It's loaded with obscenity. It's obscene. Okay, it's profane. It's offensive, and it is against the moral standards of society. It violates the moral and ethical code of a society. That's why it was deemed to be as an offensive book, as a controversial book. But right now, it's a very popular anthology of poetry in America. Then, Walt Whitman produced a temperance novel. That means he also wrote a novel by the titled as Franklin Evans. ये टेम्परेंस नॉवल क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स? इट्स अ नॉवल which becomes a voice of an author, which becomes a voice for change. ठीक है, it's a novel जो campaign करती है, which denounces all kinds of drugs and जो social evils होते हैं सोसाइटी में, उनको डिनाउंस करती हैं ये नावल. इसी को बोलते हैं टेम्परेंस नावल. Actually, it was a movement in America. It was called Temperance Movement, and during this movement, all the writers there campaigned against the intake of drugs and alcohol in American society. Okay, so it became a voice for change. Now, let's come to the
theme of this poem, miracles. Okay, great poem. Okay, we have a lot to discuss about this poem. So stay connected and stay with me, bear with me till end. It will be a really great lecture, I just assure you. Okay, theme of this poem is that Walt Whitman appreciates life and all of its small details, and we should all appreciate the small details of life, and we should all appreciate everything which is there in the world. Okay, even a small and a petty thing should be appreciated, because small details go unnoticed by us. We are not mindful of our surroundings, of these small things. Like we see a lot of things in our life, in our day-to-day life, but all these things go unnoticed. But Walt Whitman's vision of life and universe is something different from us. Okay, because everything, even a petty thing for him, is valuable, is important, and okay, it's special. And Walt Whitman's purpose of writing this poem can be, because we cannot be sure, because it's not good to judge the intention of the author. Okay, we cannot we cannot penetrate into the mind of an author, but we can guess. There are there are always what do you call those indications. There are hints, clues, तो जिससे हमें guess कर सकते हैं कि yes, his purpose was to modify the perspective of the readers towards universe, towards miracles. ये चाहता था कि जो मेरे readers हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है टुवर्ड्स मिरेकल्स, वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल पीपल have a different perspective of miracles. Okay, we'll come to that. Now, point of view, let's talk about the point of view of this poem. Well, point of view means simply who is telling the story, who is narrating the story to us. Who is that guy, who is that person? Is that person an outsider or insider? That means, is that person a part of a text, a part of this work, a part of this poem or novel or drama, or is that person an outsider? Okay, what's the relationship of that person with this text? That's called that's the point of view. That's called a narrator. Okay, उसको बोलते हैं narrator. तो यहाँ पे जो narrator है, यहाँ पे जो point of view है, it's first person point of view, boys and girls. First person point of view. Because ये कैसे हमें पता है? Because Walt Whitman used these pronouns, personal pronouns, I and me. अगर कहीं पे my भी लिखा हो तब उससे भी हमें पता चलता है कि जो क्या कहते हैं point of view है वो first person है. Okay, well now let's move ahead. Okay, well, there is a conventional and traditionalist viewpoint of miracles. Okay, and there is also Walt Whitman's own personal view and opinion regarding miracles. What's the difference between conventional and traditional concepts of miracles and Walt Whitman's own concept? Difference क्या है? We'll look at it. Okay, traditionally and conventionally, we think that miracle is something which is unusual, which is supranormal, which is supernatural, and which is extraordinary. Okay, तो हम ये समझते हैं कि जो ये एक miracle होता है, ये एक ऐसा event होता है that involves divine intervention into the human lives. ठीक है, जिसमें divine intervention हो, कोई deity, कोई god, कोई angel कुछ ऐसा करते which is impossible for us. Okay, for example, कोई मैच चल रहा है तो we have to score for example 50 out of just 6 balls. ठीक है, 6 balls are pending and we have to score 50 runs. तो हमें ऐसा लगेगा apparently it's a Herculean task, it's an impossible task. लेकिन अगर नो बॉल 2-4 हो जाए, ठीक है, और फ्री हिट मिल जाए, सो इट कैन बी पॉसिबल. तो दैट वे इट विल बी अ मिरेकुलस विन अगर हमने जीता. ओके, तो दैट वे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उनकी गाड़ी जो है वो टम्बल हो जाए, डीप गॉर्ज में चली जाए,
suppose 200 feet down, 300 feet down from the road, ठीक है, into a deep gorge, एक गहरी खाई में चली जाए और वहाँ पे जो गाड़ी में अगर फॉर एग्जांपल 10 पैसेंजर्स है, 10 में से 9 जो है वो मर जाएंगे एंड एक सर्वाइव करेगा, दैट वुड बी अ मिरेकुलस, यू नो, मिरेकुलस सर्वाइवल, ठीक है, तो वो उसका मिरेकुलस सर्वाइवल होगा, ठीक है. So but Walt Whitman's perspective towards miracles is different. He regards everything which is in this universe as a miracle. जो भी चीज, ठीक है, even a small drop of water, even an ant, even a leaf, even a drop of rain, even a grain of sand, even a petal of a flower is a miracle for Walt Whitman. Human beings, we are also miracles, ठीक है. हमारी जुबान, जिससे हम बात करते हैं, it's a ball of flesh, it's just a piece of flesh, but how do we talk through this? How is this possible? कहाँ से ये बातें आ रही हैं? It's a miracle, boys and girls. Our eyes, किस तरह हम देख पाते हैं, इट्स अ मिरेकल. कैमरा कितने इसमें हैं, DSLR में उतने पिक्सल्स नहीं होते जितने हमारी आंख में होते हैं, ओके, इट्स मोर पावरफुल देन DSLR. हमारे कान, हाउ डू वी हेयरिंग पावर, टेस्ट बड्स किस तरह होती है हमारे जुबान में, एवरीथिंग, हमारा ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग इज मिरेकल, ओके. Human heart, human brain, everything is miracle in us. Human beings, we ourselves are a microcosm, ठीक है, and this whole universe is a macrocosm. But हम एक छोटी सी दुनिया रखते हैं अपने आप में. इसी को विलियम ब्लेक ने कहा था, to see a world in a grain of sand, to see a world in a grain of sand, and and a heaven in a wild flower. And a heaven in a wild flower. ये विलियम ब्लेक कहता है कि to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. What does it mean, boys and girls? It's all about imagination. It's all about imagination. It means to see a big picture from a small detail. A grain of sand, to see a world in a grain of sand, and and a heaven in a wild flower, and to see a heaven in a wild flower. एक flower में heaven देखना. What does it mean? It's all about imagination, boys and girls. A tiny flower is a reflection. A wild flower is a reflection of a great heaven. And similarly, a grain of sand, रेत का एक दाना, it's a reflection of this whole universe, because behind it there's the same creator. This whole world and this heaven are created by God, and these tiny things, small things which are nothing, these are also created by God himself. So there's a connection. जो उनका क्रिएटर है वो एक ही है, इनका वजूद जो है उनमें एक यूनिटी है. They have a unity of being. So that's why a grain of sand is a reflection of a great heaven. Okay. So these two, grain of sand and flower, actually they become metaphors for hidden beauty and for divinity. They become metaphors for hidden beauty and divinity in the mundane. विलियम ब्लेक जो है, he would see divinity, spirituality, beauty in these mundane things. These are mundane things, worldly things. लेकिन इसमें इन थिंग्स में, इन चीज़ों में उनको डिविनिटी नजर आती थी. सेम इज द केस विद वॉल्ट विटमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. मैं ऐसी बात नहीं कर रहा था इस पे. आई डिडंट कोट इट विदाउट पर्पस. तो Walt Whitman's concept of miracles is different, boys and girls. He holds everything as a miracle. Everything, even a small detail, even a grain of sand, even a wild flower, everything is miracle for him. Okay, let's move ahead.
Okay, now let's talk about defamiliarization. It's a concept in literature जिसको कहते हैं defamiliarization. Sorry. Okay, defamiliarization means, boys and girls, it means to make common things uncommon. It means to make common things uncommon and to make ordinary things extraordinary. This is what we call defamiliarization in literature. Actually क्या होता है कि जो common things है, they go unnoticed. Okay, we do not notice these common things in our life, and if these things are presented to us by a poet in an uncommon and unusual way, it will change our perception about the world, about those things. तो जो एक पोइट होता है वो चीज़ों को इस तरह हम तक पहुंचाता है, इस तरह एक्सप्रेस करता है, इस तरह हमको शेप देता है कि जो चीज़ें हमने देखी होती है लाइफ में, जो हमने सुनी होती है, जो हमें कुछ खास नहीं लगती है, वो हमें फिर फेमिलियर नहीं लगती है, वो हमें स्ट्रेंज लगती है. उनमें एक फ्रेशनेस आती है, उनमें एक ब्यूटी आती है. ठीक है, जो फेमिलियर चीज़ें होती हैं, दे बिकम defamiliar for us, they became strange for us, they became something new and fresh for us. Okay, and उससे हमारी क्यूरियासिटी बढ़ती है जो पढ़ने में. बॉयज एंड गर्ल्स, जो कॉमन थिंग्स है पोइट मेक्स देम अनकॉमन, जो ऑर्डिनरी थिंग्स है पोइट मेक्स देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ही मेक्स देम लुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, बाय द पावर ऑफ हिज राइटिंग, बाय द पावर ऑफ हिज क्राफ्ट, acumen and imagination. Boys and girls, let's see what great poet, a contemporary of Walt Whitman, has to say about a poet. Who is a poet? इमर्सन जो है वो पोइट के बारे में बोलता है कि पोइट कैसा होना चाहिए. And he tells us that a good poet is one who tries to penetrate the mysteries of this universe, who tries to penetrate the mysteries of this universe, the mysteries of this universe. This is a good poet who tries to penetrate, who tries to understand, who tries to go at the roots of the things, and tries to comprehend those things which are unintelligible for us, which are unintelligible and incomprehensible for us. ठीक है, जो चीज़ें हमारे लिए अनइंटेलिजिबल है, जिनको हम समझ भी नहीं सकते हैं, ग्रैस्प भी नहीं कर सकते हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ है, तो पोइट ऐसा होता है कि वो जो एक चीज़ में छुपा एक राज होता है वो उसकी तह तक जाता है. ठीक है, वो उसके जो एक मिस्ट्री होती है किसी चीज़ में, वो इसके हार्ट तक जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट वर्ड्सवर्थ्स definition of a poet. What Wordsworth had to say about a poet. Wordsworth poet के बारे में क्या कहता है और एक poet कैसा होना चाहिए. Okay, pay attention please. Wordsworth says that a great poet has a profound sensibility. Okay, profound sensibility होनी चाहिए, profound sensibility होना चाहिए. Okay, एक poet बहुत ज़्यादा हसास होना चाहिए. ठीक है, एंड ही मस्ट हैव अ हायर डिग्री ऑफ इमेजिनेशन एज वेल. उसकी जो इमेजिनेशन है वो भी कॉमन पीपल से ज़्यादा होनी चाहिए. उसका जो इमेजिनेटिव पावर है दैट शुड बी ग्रेटर देन कॉमन पीपल. एंड ही शुड हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑल्सो. That means he should be able to recall all the details which that poet has experienced in life. जो भी उसने देखा, जो भी उसने बोला है, जो भी उसने experience किया, he should be able to recall all those things. He should be able to remember all those things. That's why इसको हम बोलते हैं photographic memory. Okay, and next he should have this quality, and through these quality he would present to us those things which are unintelligible for us.
ठीक है, जिनको हम डीम ही नहीं करते हैं कि वो they are something special. And when a poet has all these characteristics, all these features, all these qualities, फिर जब हम तक वो कोई बात पहुँचाएगा, that point, that idea, that line of poetry will shock the readers. Okay, it will appear strange to readers. That's called defamiliarization, and that's called poetry, special poetry. Boys and girls, मैंने इसलिए ये कोट की ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्ट विटमैन का जो पर्सपेक्टिव है अबाउट नेचर, अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट दिस यूनिवर्स, वो क्यों डीम करते हैं एवरीथिंग को मिरेकल. व्हाई डज ही कॉल एवरीथिंग अ मिरेकल? तो इसके पीछे ये चीज़ें हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. Now, boys and girls, we will analyze and interpret this poem stanza by stanza. Okay, now in the first line, the very first line, पहला जो word use करता है Walt Whitman, he uses why. There's a question in the beginning of this poem, and there's a question also at the end of this poem. Beginning may be question, end may be question. It starts with a question and it ends with a question as well. Okay, now why Walt Whitman starts his poem with a question? It's because it's not a question for question's sake. It's a rhetorical device. It's a rhetorical question, boys and girls. And a rhetorical question means, boys and girls, a question to which questioner doesn't expect any answer from the audience. Okay, and it's just posed only for dramatic or persuasive effect. ठीक है, ऑडियंस को परसुएट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, उनकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एक स्पीकर क्वेश्चन करता है कभी इन द बिगिनिंग ऑफ a speech or of a piece of writing. तो इसीलिए यहाँ पे इसने भी स्टार्ट किया है द क्वेश्चन, ताकि हमारी अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, हम कन्विंस हो जाए कि वो क्या रहे है. ठीक है, सो ही स्टार्ट्स विद why who makes much of a miracle. Please open your book at page 78. Why who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Okay, now this why here shows, boys and girls, bewilderment. It shows bewilderment, surprise. Walt Whitman is surprised. He cannot understand why these people don't understand that everything is a miracle. Why? Who makes much of a miracle? Makes much means, boys and girls, makes much is a phrase. It means to get excited, Why do these people get excited about miracles? Why do these people talk high about these miracles? Why do these people deem miracles something extraordinary, unusual, supranormal? क्यों? As to me, I know of nothing else but miracles. अगर मुझसे पूछें my opinion of miracles, I know of nothing. There is nothing in this universe which I know. That means there is nothing in the world that's not a miracle. There is nothing else but miracles in this world, boys and girls. Everything which I can see, which I can touch, which I can feel, which I can hear, everything is a miracle here. So he is surprised to see and to know that people regard miracles something extraordinary. No, it's not so. Like it's not like that. And makes much means to get excited, and we have we talked about Walt Whitman's concept of miracles and a conventional and traditional viewpoint of miracles. So in a way, Walt Whitman is anti conventional and is also anti traditional.
he doesn't go with tradition, he doesn't go with convention, ठीक है, he has his own view of miracles. Okay, now अब पहले इसने बोला, ठीक है, पहले इसने एक स्वीपिंग रिमार्क दिया कि देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट इज एन मिरेकल, कि दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज अ मिरेकल. नाउ ये बात इसने बताई. नाउ ही विल जस्ट प्रोवाइड अस अ कैटलॉग ऑफ थिंग्स, कैटलॉग, a list of all those things which he regards a miracle. अब ये हमें एक एक करके एक लिस्ट देगा कि ये भी मिरेकल, ये भी मिरेकल, ये भी मिरेकल. ओके, क्यों ये कैटलॉग की लिस्ट इसलिए देता है? इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पॉइंट, इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स हिज पॉइंट. ठीक है, अपनी जो उसने स्टेटमेंट दिया, जो उसने आर्गुमेंट पेश किया, उसको रीइंफोर्समेंट के लिए, उसको स्ट्रेस देने के लिए वो एक कैटलॉग हमें पेश करेगा, उसकी दलील के, उसके प्रूफ के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए. नाउ लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स विच ही कॉल्स मिरेकल्स. ओके, स्टेंजा फर्स्ट, line third. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses toward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. Now ये चीज़ें सारी इसके लिए miracles है. मैनहाटन, ठीक है, ये अमेरिका का एक बिजी प्लेस है, ठीक है, क्राउडेड प्लेस ऑफ अमेरिका. ठीक है, ये न्यूयॉर्क का एक क्राउडेड प्लेस है मैनहाटन, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, एंड वॉल्ट विटमैन बोलता है कि वेदर आई वॉक थ्रू दी स्ट्रीट्स ऑफ मैनहाटन, ये भी मेरे लिए एक मिरेकल है. मैं वॉक करूँ तो ये भी मिरेकल है. हाउ एम आई एबल टू वॉक ऑन दीज टू sticks means legs. Okay, how am I able to walk? How are people able to walk? It's a miracle. ठीक है, and wade with naked feet, and or dart my sight over the roofs of houses toward the sky. Dart means अपनी नज़र को मैं ऊपर उठाऊं, ऊपर मैं मकानों की छतों को देखूं, इन बिल्डिंग्स की छतों को देखूं, टुवर्ड द स्काई, ऊपर की ओर, आसमानों की ओर. अगर मैं वहाँ पे भी देखूं, इफ़ आई लुक एट दीज टॉल बिल्डिंग्स, दीज स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, दीज ह्यूज एंड इनॉर्मस बिल्डिंग्स, अगर मैं ऊपर देखूं या मैं नीचे स्ट्रीट्स में चलूं, दे आर बोथ मिरेकल्स फॉर मी. एवरीथिंग इज अ मिरेकल. ठीक है, अच्छा, ये बिल्डिंग्स को मिरेकल क्यों बोलता है या स्ट्रीट्स को मिरेकल क्यों बोलता है? बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स, वॉल्ट विटमैन थिंक्स दैट कि जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स हु हैज़ गिवन देम दिस एबिलिटी टू जस्ट मैन्युफैक्चर एंड बिल्ड सच ह्यूज एंड टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, जो आसमानों से बातें करते हैं, दैट मीन्स इट्स अ मिरेकल. ह्यूमन बींग्स की जो कंस्ट्रक्शन है of streets, of buildings, of all these things, it's a miracles. Human brain itself is a miracle. Now, or wade with naked feet, अगर मैं, wade means to walk through water, अगर मैं water पानी में चलूँ, बीच पे, ठीक है, in the edge of water, अगर मैं बीच पे चलूँ, naked feet means without shoes, तो वो भी मेरे लिए एक miracle है. यहाँ पे बात क्या हो रही है? He talks about that soothing touch, that delicate touch, that serene touch of water when it touches our skin. जब हम पानी को टच करते हैं गर्मी में, तो वो कैसा एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, वो उसकी बात हो रही है. इट्स ऑल्सो अ मिरेकल, बॉयज एंड गर्ल्स. वो फीलिंग जो उस वक्त आती है, इट्स अ मिरेकल, बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, नेक्स्ट लाइन, next stanza rather, or stand under trees in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at strangers opposite me riding in the car. ये भी इसके लिए miracle है. Now let's count them one by one. Talk with anyone I love, कि मैं अगर मैं किसी से बात करूं, किसी जानने वाले से जो who is dear to me, who is close to me, ठीक है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे अगर मैं बात करूँ, it's also a miracle. Because mankind जो है, God has just put his loving element in the human hearts.
अगर हमारे हार्ट्स में ये लविंग एलिमेंट नहीं होता तो हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, नफरत करते। तो जो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इट्स ऑल्सो अ मेडिकल। वी आर ऑल डिफरेंट, we have all different individualities, different likes and dislikes, different outlook, different perspective। हम बिल्कुल हमारे choice different होते हैं, but irrespective of all these things, irrespective of all these differences, we love each other, we live in unity, we live in a family, we live in a society। that's a miracle for him। okay, look at strangers opposite me riding in the car। चाहे मैं राइड कर रहा हूँ कार में और मैं सिग्नल पे या और मैं राइड करते हुए अपोजिट कार की तरफ देखूँ, जो उसमें जो ड्राइवर है उसको देखूँ, इट्स ऑल्सो मेडिकल फॉर मी बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ मेडिकल फॉर मी बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स वन अ ग्रेट फीलिंग। तो ये भी इसके लिए एक मेडिकल है। दीज स्मॉल डिटेल्स, ऑल दीज स्मॉल डिटेल्स विच गो अननोटिस्ड इन आवर लाइफ, जिन्हें हम जो है ना बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। these are all miracles for Walt Whitman because he is a poet of imagination। उसको सब में ब्यूटी नजर आती है, डिविनिटी नजर आती है। ठीक है, इन दिस mundane things। now let's move ahead। okay, or sit at table at dinner with the rest। okay, have dinner, if I have dinner with the rest of my family, with the rest of my friends, it's also a miracle for me, it's also a miracle for Walt Whitman। एक तो था अलग खाना, अगर इंसान ऐसे कुनिजुन, अगर इंसान अकेला होता, all alone होता in this world, तो जब इंसान खाता पीता तो इंसान को वो मज़ा नहीं आता। बट when we share, when we spend our time with our friends, with our family, when we have meals, when we have lunch and dinner together in the family, तो it gives a nice feeling to us। ठीक है, और खाने का मज़ा भी आता है। that's why वो feeling जो है it's a miracle। ठीक है, now next stanza, or watch honeybees busy around the hive on a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite delicate thin curve of the new moon in spring। all these things which he has counted here, all these things are miracles for boys and girls, for miracles boys and girls। like if you watch these honeybees busy around the beehive, ठीक है, अपने उस बी हाइव का जो बी हाइव जो उनका होता है, अगर वो वहाँ पे बिजी होंगी, when they swarm that bee hive, it's also a miracle for him because they work together in unity। they suck this nectar from the roses and जिससे फिर हमारे लिए हनी बनता है। ठीक है, they have a proper system there, they have their king, they have their and that king has his courtiers। तो वहाँ पे दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ग्रेट कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैनर वो काम करते हैं। वो सब कुछ एक मेरिकल जो है विटमन के लिए। और समर फॉरनून का क्यों यहाँ पे बात की, क्योंकि बीज जो है ना वो समर में ही आते हैं। ठीक है, समर में ही वो अपना काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, और इफ आई वॉच एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड, तो दिस फीलिंग जो उस वक्त फील आता है इंसान को, अगर हम भेड़ बकरियों को, मवेशियों को, इन कैटल को हम देखते हैं फील्ड्स में ग्रेजिंग करते हैं, इट गिव्स एन इमेंस प्लेजर टू अस। ठीक है, जो सेंसिटिव बीइंग्स होते हैं, इट गिव्स देम एन इमेंस फीलिंग ऑफ प्लेजर। ओके, एंड दिस फीलिंग, this small detail is also a miracle for Walt Whitman, boys and girls। now next one, or the wonderfulness of the sundown। sundown here means dusk, वंडरफुलनेस, जो खूबसूरत नज़ारा, जो बहुत हैरत अंगेज नज़ारा डस्क के वक्त होता है। वो ऑरेंज लाइट, वो पिंक, वो ऑरेंज लाइट जो उस वक्त परवेड करती है इन द वर्ल्ड इवनिंग के टाइम पे, वो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है जब सन अपने होराइजन पे आता है। इट्स होराइजन नॉट हॉरिजन। ओके, तो उस वक्त जो वो ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, इट्स ऑल्सो मेरिकल फॉर वॉल्ट विटमन। और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, अगर स्टार्स शाइन करें शाम को, when they shine in the night so quietly and brightly, वो they do not produce any light, sorry they do not produce any sound। ठीक है, they do not make noise, they do not disturb us,
they beautify our universe without disturbing us, ठीक है, without any cost. They shine brightly, okay. A starry night, a star-studded night, star-studded night is a great and treat to watch. It's a treat to ear, to eyes, human eyes, and it's a miracle for Walt Whitman. Or the exquisite delicate thin curve of the new moon. जो क्रिसेंट मून होती हैं उसका जो डेलिकेट नाजुक सा थिन कर्व होता है. एक्सक्यूजिट मीन्स एक्सेप्शनल बॉयज एंड गर्ल्स. इट मीन्स एक्सेप्शनल, फाइन, प्लीजिंग. जो ऐसा एक थिन कर्व होता है न्यू मून का, क्रिसेंट मून का, ये भी इसके लिए एक मिरेकल है. इट लुक्स ब्यूटिफुल, बट वी शुड हैव दोज सेंसेस बॉयज एंड गर्ल्स. हमारे पास वो सेंसेस होने चाहिए. वी शुड हैव दोज गेटवेज ऑफ नॉलेज, गेटवेज ऑफ दीज थिंग्स, दीज ईस्थेटिक प्लेजर हम में होना चाहिए, ठीक है, ईस्थेटिक सेंस हम में होना चाहिए. देन वी कैन डीम दीज थिंग्स एज मिरेकल्स बॉयज एंड गर्ल्स. नाउ मूविंग फर्दर, इन स्प्रिंग क्यों नहीं बोला है, स्प्रिंग की बात क्यों की है यहाँ पे इन स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग में जो मून है it has a great beauty. It's more beautiful. It shines more beautifully in spring than in other seasons. Now let's move on to next stanza. Okay, boys and girls, we're running short of time, so I'm speeding up. Okay, next stanza हमें है, these with the rest, one and all, are to me miracles. The whole referring, it's referring, not referring, yet each distinct and in its place. देखो बात क्या हो रही है. These with the rest, these means जो उसने चीज़ें काउंट की है, streets of Manhattan, wade through water, have dinner with friends, ठीक है, talk to anyone whom I love, ठीक है, honey bees, sundown, sunrise, everything, जो भी इसने काउंट किया है, ये आई किस में, these में, with the rest मीन जो उसने काउंट नहीं किया, जो रह गया. वन एंड ऑल, चाहे एक लें इसमें हम इंडिविजुअली या सारे जनरली हम लें इसमें, आर टू मी मिरेकल्स, ये सब कुछ, द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज अ मिरेकल फॉर हिम. चाहे इंडिविजुअली किसी एक को लें या हम काउंट करें, हम जनरली सबको जो है काउंट करें. द होल रिफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस. द होल रिफरिंग मीन्स जो इसने जनरलाइज किया इन चीज़ों को, जो इसने काउंट की अभी इस पोम में, ये चीज़ भी मेरिकल, दिस इज ऑल्सो मेरिकल, दिस इज ऑल्सो मेरिकल. द होल रिफरिंग, इन चीज़ों से इसने सबकी तरफ रिफर किया कि दे आर मेरिकल्स, ठीक है, एल्यूड किया. सो जनरली स्पीकिंग these all refer to miracles. These all are miraculous and yet each distinct. जनरली तो ये सारे मिरेकल्स है ही. जब हम इन सबको एज अ होल लेंगे तब तो ये मिरेकल है ही. येट ईच डिस्टिंक्ट, इनमें से अगर हम एक को अलग करेंगे, दे आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स दे आर डिस्क्रीट. हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है. ह्यूमन्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, honeybees, these insects, sunrise, sunset, moon, everything, stars, everything has their own importance. इसीलिए यहाँ पे इसने बोला distinct. Now next line, to me every hour of the light and dark is a miracle. Light and dark, हर एक घंटा, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो. Light means day and dark means night. It's a miracle for Walt Whitman, boys and girls. Every cubic inch of space is a miracle for him. Every cubic inch of a space is a miracle. Space की जो ये space है इस universe में, हर एक cubic inch इसमें, एक जर्रा, हर एक इंच इसकी miracle है for Walt Whitman. Because पहली लाइन में इसने टाइम की बात की, every hour of light and dark, तो इसमें टाइम आ गया. दूसरी में इसने every cubic inch of space की बात की, स्पेस इसमें आ गया. तो इन दो लाइन्स में ही टॉक्स अबाउट टाइम एंड स्पेस. एंड जो यूनिवर्स है, नथिंग इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इन दिस यूनिवर्स, बॉयज एंड गर्ल्स. एवरीथिंग विच एग्जिस्ट्स विद इन दिस यूनिवर्स इज पॉसिबल ड्यू टू दिस टाइम एंड स्पेस. रोटेशन जो होती है प्लैनेट्स की, जो ये रोटेट करते हैं, इन रोटेशन है, उसी से दिन और रात बनती है, उससे लाइट एंड डार्क बनता है, ठीक है. That's why it's miraculous. These are miracles for Walt Whitman.
Now, next line. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. That means जो हर एक ज़र्रा इस सरफेस का, इस क्रस्ट का, जो ज़मीन का क्रस्ट है, इसका हर एक ज़र्रा जो है, it's a miracle for Walt Whitman. And every foot of the interior swarms with the same. तो हर एक जो फीट है, हर एक जो इंच है, हर एक जो फुट है इंटीरियर का, इंटीरियर हियर मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स मेंटल कोर, अर्थ का मेंटल कोर, क्रस्ट मीन्स सरफेस, इंटीरियर से यहाँ पे इसकी मुराद ही रिफर्स टू मेंटल एंड कोर. दैट मीन्स जमीन के नीचे जो भी है, इट्स लोडेड विद मिरेकल्स, एवरीथिंग इज देयर, देयर आर मिरेकल. नाउ to me the sea is a continual miracle. The fishes that swim, the rocks, the motions of the waves, the ships with men in them. That means he calls sea a continual miracle because it's very vast. It was there from times immemorial and it would be there. Okay, so it's a continuous miracle. There are fish, there are rocks, there are motions of waves. Okay, waves are ongoing there, and in these oceans, in these seas, there are ships and there are men with them. All these things, they are miracles. They are lifelines. ये जो seas है, these are the lifelines. They make our life possible. ठीक है. So these are all miracles. जब ये सब कुछ count करता है, when he counts all these miracles, ठीक है, first. In the first line, he shows his surprise. He shows bewilderment. ठीक है, किसके बारे में? About the perspective of human beings, of the people towards miracles. He is surprised क्योंकि his perspective is different from them. Then he says everything is miracle. फिर अपने point को validate करने के लिए, substantiate करने के लिए, prove करने के लिए, he gives a catalog of things. And in the end, he asks a question once again. जब उसने अपनी बात को साबित किया, prove किया उसको, फिर बोलता है what stranger miracles are there? अब मुझे बताओ कि क्या, कौन से stranger miracles है, कौन सा unusual miracle है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो unusual है, extraordinary है, supranormal है, जो आपको miracle लगता है. That means मैंने अब साबित किया है कि everything is miracle, every inch is miracle, boys and girls. Now, quickly let us talk about the poetic devices used in the poem. इसमें जो poetic devices use हुए, first of all there is anaphora. Anaphora means जब beginning में कुछ words repeat हो जाएं कुछ lines में, उसे बोलते हैं anaphora. तो यहाँ पे बहुत सारी lines में और beginning में repeat हुआ. If you check your text, so this is anaphora. Second device is alliteration. Alliteration means repetition of the consonants in the beginning of some words. तो यहाँ पे आप इस लाइन में देखेंगे stars shining so, so this consonant sound ये यहाँ पे repeat हुआ है. This is called alliteration. And there is also repetition. Repetition means जब कोई word या जब कोई phrase repeat हो किसी poem में बहुत बार, उसको बोलते हैं repetition. Here the word miracle is repeated many times. And जो पेनल्टीमेट लाइन है इस पोम की, दैट मीन्स लास्ट लाइन से पहली वाली लाइन जो है, उसमें दिस वर्ड द को बहुत बार रिपीट किया गया. इट्स ऑल्सो रिपीटेशन. सो बॉयज एंड गर्ल्स, इट वॉज अ लेंथी लेक्चर क्योंकि ये पोएम ही ऐसी थी. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल पोएम. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट with your friends, and keep watching and stay tuned in. I'll be back with a new lecture.